So let's start with hydrodynamics now. So first topic on hydrodynamics is viscosity. So just as surface tension is the property of liquid at rest, viscosity is the property of fluid in motion. So whenever a fluid is moving, there is its inherent property is viscosity. So viscosity is basically the friction between the layers of fluid. So when one layer of fluid is moving over the other layer of fluid, so there is a force of friction which acts between these two layers. So that force of friction is called viscosity. So most of the fluids are not ideal ones. They offer some resistance to the fluid motion. Okay. So most of the fluids are not ideal ones. They offer some resistance to the fluid motion. When the fluid moves in the form of layers having different velocity, a resistance comes into play which tends to destroy the relative motion of different layers of the fluid. This resistance is an internal friction of fluid, similar to the friction when a solid moves on the surface of another solid. This internal friction of moving fluid is called viscosity of fluid. Okay, so that's what we were talking about, है ना? When fluid moves in the form of layers, so जब fluid layers के form में move करता है एक दूसरे के ऊपर, having different velocities, and each of these layers, if they have different velocities, a resistance comes into play which tends to destroy the relative motion of the different layers of the fluid. So there will be resistance which will destroy this relative motion, which will not allow this relative motion to happen, right? This resistance is an internal friction of fluid, similar to the friction when a solid moves on the surface of another solid. This internal friction of moving fluid is called viscosity of fluid. Okay. Now, thus, viscosity is the property of the fluid, liquid or gas. So, fluid में liquid gas दोनों आ जाता है. So, it is a property of the fluid by virtue of which an internal friction force comes into play when a fluid is in motion in the form of layers having relative motion. It opposes the relative motion of the different layers. So, basically, what happens when one layer of fluid, let's say, these are two different layers of fluid, when one layer of fluid tries to move over the other layer of the fluid, so this layer of fluid will oppose this motion of the top layer. So this opposition of motion of relative this opposition of relative motion is called viscosity of fluid. Viscosity is also called as fluid friction or viscous drag of fluid. So viscosity के ये दो और नाम है. तो viscosity को बहुत जगह आप देखोगे as a fluid friction भी बोला गया है और viscous drag of fluid भी बोला गया है, because it opposes the relative motion of different layers of fluids, right? Now, it is found that in a flowing liquid, the stress is proportional to the rate of change of strain or strain rate, right? So, in a flowing liquid, you will always find, जैसे solids में हमने कहा कि stress is proportional to strain, right? Stress upon strain was constant, जिसको हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं या फिर जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं या जो भी. तो वहां पे बेसिकली सॉलिड्स में स्ट्रेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. यहाँ पे वैसा नहीं है. इन फ्लोइंग लिक्विड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेन रेट. सो दैट मीन्स stress is proportional to change in strain. So change in strain upon time taken. Okay, so change in strain upon time taken will be is directly proportional. Stress is directly proportional to this. So this is basically the property of fluid. Now it is different from solid where stress is directly proportional to strain. Here stress is directly proportional to rate of change of strain.
So if we mathematically write this, for the flowing liquid, the rate of change of strain or strain rate will be change in, let's say, shear strain by time interval. So change in shear strain is delta x upon delta x upon L divided by delta T. Change in shear strain is delta x upon L. So if you see this previous diagram, so here this is delta x upon L upon this distance L is basically shear stress basically. So shear stress, change in shear stress by time interval delta T will give us the value of rate of change of strain. Now delta x by delta t, we know that distance moved by the top layer per unit time is equal to velocity of the layer, upper layer. So delta x by delta t is replaced by v. So this is v by L, and shearing stress is F by A. Okay. So coefficient of viscosity, when we say that shearing stress is directly proportional to strain rate. So if you can write, shearing stress is directly proportional to strain rate. So अगर इक्वालिटी साइन से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा shearing stress is equal to constant of proportionality into strain rate. So constant of proportionality is basically known as coefficient of viscosity. So this will be coefficient of viscosity becomes shearing stress upon strain rate. Okay, so coefficient of viscosity is shearing stress upon strain rate. Coefficient of viscosity for a fluid is defined as ratio of shearing stress to strain rate. So shearing stress is F by A divided by strain rate, that is V by L, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने calculate किया. So shearing stress by strain rate, अब ये L जाके F से multiply हो जाएगा, F into L divided by V into A. This is coefficient of viscosity, force into length L and then divided by speed into area. So if dV is the difference in velocity of two layers of moving liquid, distance dx apart, then V by L, देखो ये L था, है ना, पूरे टॉप से बॉटम तक का, और ये अपर लेयर का वेलोसिटी v है. तो v बाय l ये बेसिकली हमको क्या देगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड देगा. दो लेयर के लिक्विड के बीच में वेलोसिटी का ग्रेडियंट देगा, राइट. मतलब वेलोसिटी, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा, यहाँ पे टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा. v बाय l जो होता है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट देता है, किस स्पीड से, किस रेट से वो वेलोसिटी चेंज कर रहा है हर लेयर का. So if dv is the difference in velocity of two layers of moving liquid, distance dx apart, then rate of change of velocity with respect to distance dv upon dx is equal to v by l. तो यहाँ जो ये v by l है ना, उसको रिप्लेस कर लेते हैं हम लोग. तो f by a, ये l को हम लोग नीचे ले आते हैं, v by l. So this is basically f by a divided by dv upon dx. dv upon dx. Okay. So f by a divided by dv upon dx. So this is our coefficient of viscosity. So coefficient of viscosity eta for a fluid is defined as ratio of shearing stress to strain rate. So dv by dx is strain rate. Clear है बच्चों? Yes, sir. So thus coefficient of viscosity of a liquid is equal to tangential force required to maintain a unit velocity gradient between two parallel layers of liquid, each of area unity. तो ये basically coefficient of viscosity, ये F by A divided by, ठीक है, so F by A divided by
dv अपॉन dx है. अब कह रहा है coefficient of viscosity of liquid is equal to tangential force required to maintain a unit velocity gradient. dv by dx अगर unity है 1 है between two layers of liquid each of area unity, ये area है इसका अगर unity है तो ये coefficient of viscosity क्या हो जाएगा 1 एक f के बराबर आ जाएगा. वही चीज बता रहा है यहाँ पे. coefficient of viscosity of a liquid is equal to tangential force. कब? when the area is unity and the velocity gradient is also unity. ठीक है ना. Now coefficient of the dimensional formula of coefficient of viscosity. So हम लोगों ने देखा कि भाई coefficient of viscosity जो है f into L divided by v into a है. अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का है m1 L1 T minus 2, लेंथ का L, वेलोसिटी का LT minus 1 और एरिया का L स्क्वायर. तो इससे ये देखो अब इसको सबको एम एल स्क्वायर, ये एल और ये एल कट गया, एम एल माइनस वन टी माइनस वन हो जाता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का. तो जब तक तुमको रिलेशन नहीं याद रहेगा ना तब तक डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना भी तुम्हारे लिए मुश्किल होगा. तो इसीलिए रिलेशंस अच्छे से याद रहेंगे पूरे फिजिक्स में तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बिल्कुल चुटकियों की बात होगी. सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई वी इंटू ए, ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना है. Unit of coefficient of viscosity, coefficient of viscosity eta is equal to f divided by a dv by dx. ये भी हम लोग कर सकते हैं. SI unit of coefficient of viscosity is Poisson, right? तो इसका जो SI यूनिट है Poissons है और इसको हम लोग पास्कल सेकेंड भी कहते हैं, F by A. ठीक है, F by A फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, तो पास्कल हो गया इनटू डिवाइडेड बाय dv by dx कर लो. या यहाँ पे f by a और v है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मतलब एल एल कट गया, एक पर सेकंड वाला सेकंड ऊपर चला गया तो पास्कल इंटू सेकंड हो गया बेसिकली. उसी तरह पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, केजी पर मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से. ये सारे एसआई यूनिट्स हो गए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के. 1 Poisson or Pascal second is equal to 1 Newton divided by 1 meter square into 1 meter per second divided by meter, right? So dv by dx divided by dx से का यही मतलब है यहाँ पे. आगे बच्चों समझ में? वेदांश इतने दिन से थे कहाँ तुम? 2-3 दिन से हम तुमको ढूंढ रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हो क्लास में. कहाँ थे? तबीयत खराब हो गई थी क्या वेदांश? वेदांश आर यू देयर? पता नहीं, अभी भी नहीं दिख रहे हैं, आवाज तो दे नहीं रहे हैं. आज बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूँ 15 बच्चे क्लास में अटेंड कर रहे हैं, मतलब काफी दिनों से. आप लोग प्लीज क्लास मिस मत किया कीजिए ना. आई एम नॉट एबल टू find out most of the times who is absent or who is present, but then still the numbers speak. So there are 17-18 students who used to attend the classes. 2-3 बच्चे ये constantly absent रहते हैं. तो प्लीज आप लोग एब्सेंट ना रहें क्योंकि आगे फिर समझ में नहीं आएगा. मतलब ठीक है थियोरेटिकल पोर्शन है बट करना तो सारा चीज ही है. ओके. So coefficient of viscosity of a liquid is said to be 1 Poisson or 1 Pascal second if 1 Newton tangential force is required to maintain the velocity gradient of 1 meter per second per meter between two parallel layers of liquid each of area 1 square meter. So the CGS unit of coefficient of viscosity is dyne per centimeter square into second. तो बेसिकली जो वहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. मतलब प्रेशर का यूनिट सीजीएस में डाल के इंटू सेकेंड कर दो. और इसको पॉइज भी कहते हैं, वहाँ पॉइजल्स था यहाँ पे पॉइज होता है. तो 1 Poisson is 1 Newton per meter square into second, 10 dyne into 100 centimeter per 100 centimeter square into second.
So this will be 10 dyne per centimeter square into seconds. So this is 10 poise basically. So 1 decapoise is equal to 10 poise, which is equal to 1 poisels. So relative velocity, relative viscosity of a liquid is viscosity of liquid by viscosity of water. तो relative viscosity एक term होता है which is defined as viscosity of liquid by viscosity of water. Note that coefficient of viscosity is not a vector quantity but it is a scalar quantity. है ना, ये vector quantity नहीं है, scalar quantity है coefficient of viscosity. Now distinction between viscosity and solid friction की भाई difference क्या है solid friction और viscosity के बीच में. तो पहले हम लोग similarity देखेंगे और फिर जो differences है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो viscosity is similar to solid friction. क्या चीज में similar है? Friction among solid surface in contact in the respect that पहला similarity है both come into play whenever there is a relative motion. So friction also always opposes the relative motion. Similarly, viscosity always opposes the relative motion. तो दोनों हमेशा relative motion को oppose करता है. Second point पे आते हैं, both opposes relative motion and both are due to. So this comes into play whenever there is a relative motion. Both oppose relative motion and both are due to molecular forces. Friction force भी molecular फोर्सेस के वजह से है और ये जो विस्कस फोर्सेस है ये भी मॉलिक्यूलर फोर्सेस के वजह से है. बोथ एक्ट टेंजेंशियली इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ मोशन. हमेशा मोशन को अपोज करेंगे ये दोनों फोर्स. सो बोथ ऑफ दीज फोर्स एक्ट टेंजेंशियली इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ मोशन. Now, viscosity differs from solid friction in respect that viscous force acting between two layers of the liquid depends on the area of the layers, relative velocity of two layers, and distance between two layers. So, ये जो viscosity है, अब हम लोग ने पहले देखा similarity friction force से क्या क्या है. अब dissimilarity क्या क्या है? It differs from solid friction in the respect that viscous force acting between two layers of the liquid depends upon first the area of the layers, second the relative velocity of two layers, third distance between two layers, fourth viscosity does not depend on the normal reaction between two layers of the liquid. तो ये क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? देखो, एरिया ऑफ लेयर पे डिपेंड करता है. फ्रिक्शन कभी भी एरिया पे नहीं डिपेंडेंट था. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स पे फ्रिक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन. यहाँ पे देखो, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज बिटवीन देम. है ना, चाहे फास्ट मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, फ्रिक्शन हमेशा सेम होगा और विस्कोसिटी चेंज करेगा. डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, ठीक है, तो ये जो विस्कोसिटी है ये डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स के बीच में भी डिपेंड करेगा. सॉलिड फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट. है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पे विस्कोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड. राइट, तो ये दीज आर द डिसिमिलैरिटी. फर्स्ट की विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन एरिया, it is dependent on relative velocity of two layers, and viscosity does not depend on the normal reaction between two layers of the liquid. So these are the main 3 points of differences between solid friction and the viscous force. समझ आ गया सब? Now we'll come to Poisson's formula. So when a liquid flows through a horizontal tube with a steady flow under some external pressure, the liquid moves in cylindrical layers coaxial with the axis of the tube. So you will find that when the liquid flows through a horizontal tube, you will find this kind of layers, liquid moving in different kinds of layers.
तो एक लेयर ये हो गया जो मूव कर रहा है, दूसरा लेयर ये हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया. सो लिक्विड मूव्स इन लेयर्स. जो सबसे जो सरफेस है, सरफेस से जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा. सरफेस के पास वाला जो लेयर है उसका स्पीड सबसे कम होगा. सो व्हेन अ लिक्विड फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब विद अ स्टेडी फ्लो अंडर सम एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, the liquid moves in cylindrical layers coaxial with the axis of the tube. So cylindrical layer और coaxial मतलब सभी का axis same है ये वाला, with the axis of the tube. The velocity of the cylindrical layer is maximum along the axis of the tube. Velocity maximum कहाँ है? Axis के along, जो center के along जो velocity है, this is maximum. So velocity of the cylindrical layer. So velocity of cylindrical layer is maximum along the axis of the tube and it goes on decreasing towards the wall of the tube. तो जैसे जैसे हम लोग बाहर की ओर मूव करेंगे ये डिक्रीज करता जाएगा वॉल ऑफ द ट्यूब. The velocity is minimum for the layer in contact with the wall of the tube. तो वो लेयर जो कि यहाँ पे वॉल से कांटेक्ट में है वहां पे वेलोसिटी मिनिमम है. सो velocity is minimum for a layer in contact with the wall of the tube. The velocity of different layers is shown by arrowed lines in the figure. तो यहाँ पे जो arrowed line है ये इसके velocity को represent कर रहा है. जितना लंबा arrow मतलब उतना ज्यादा velocity, जितना छोटा arrow उतना छोटा velocity, उतना कम velocity. Poisel studied the rate of flow of liquid through horizontal capillary tube and concluded that the volume V of the liquid flowing per second through a capillary tube varies first directly as the pressure difference P across the two ends of the tube. तो ये जो velocity volume V है flowing per second. So V is the volume of liquid flowing per second, right? So volume of liquid flowing per second varies directly as the pressure difference across the two ends of the tube. So V is directly proportional to pressure difference. Second, directly as the fourth power of radius r of the tube. So V is proportional to r raised to the power 4. Inversely as the length of the tube. So V is inversely proportional to or proportional to 1 by L or inversely proportional to L length of the tube, and inversely as the coefficient of viscosity of the tube. So V is proportional to 1 by eta. तो इन सब को अब हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं. मतलब ये क्या आ जाएगा, V is proportional to PR4 by L eta. ठीक है. So volume V of liquid flowing per second. Okay. So combining these factors, we get volume of the liquid V is proportional to, sorry, proportional में ये नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट जब इक्वालिटी से रिप्लेस करेंगे तब आएगा. तो V is proportional to PR4 by eta L. जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा V is equal to pi by 8 into PR4 by eta L. So where pi by 8 is a constant of proportionality, this equation is called Poiseuille's equation and is true for only for steady flow of liquid through a horizontal capillary tube. तो ये हम लोग अभी अगले इस पार्ट में करेंगे. स्टेडी फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, फ्लो में स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी बस इतना जान लो कि ये जो Poiseuille's equation है, दिस इज ओनली ट्रू in case of, this is true only for the steady flow of liquid through a horizontal capillary tube. Now derivation of Poiseuille's formula by dimensional analysis. So Poiseuille studied the rate of flow of liquid through a horizontal capillary tube and concluded that volume V of the liquid flowing per second through the capillary tube depends upon first pressure gradient. ठीक है. तो अब ये जो पॉइजल्स का जो इन्होंने हम लोगों ने पढ़ा कि वॉल्यूम
V flowing per second, rate of flow of volume is equal to pi by I into PR4 by eta L. अब इसको हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे, डेरिवेशन ऑफ पॉइजल्स फॉर्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस. तो ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर जब हम लोग कर रहे थे, है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो वहां पे डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर में हमने देखा था कि डिराइव कर सकते हैं हम कोई भी फॉर्मूला को अगर हमें पता है कि वो किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. तो हम लोगों को ये पता है कि एक्सपेरिमेंटली कि पॉइजल स्टडीड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब and concluded that the volume V of the liquid flowing per second through the capillary tube depends upon. तो ये जो वॉल्यूम V of the liquid flowing per second किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? पहला प्रेशर ग्रेडियंट P by L, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ लेंथ, इस पे डिपेंड करता है. दूसरा रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब पे डिपेंड करता है. तीसरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है. तो अब हम लोग मान लेते हैं कि ये V is proportional to, है ना, P by L raised to the power A, R raised to the power B and eta raised to the power C. तो ये raised to the power A, B, C ये basically इनके dimensions हैं. So where A, B, C are dimension of V in terms of P by L, R and eta. K is a dimensionless constant. यही proportionality को equality sign से replace कर देंगे तो K एक dimensionless constant भी आ जाता है. Now dimensional formula of V क्या है? वॉल्यूम पर सेकेंड, मतलब L क्यूब रेज टू द पावर T minus 1, राइट. सो V is equal to L क्यूब T रेज टू द पावर minus 1. Now dimensional formula of P by L, right. So dimensional formula of P by L is, so P is basically ml minus 1 T minus 2 pressure, चेंज इन प्रेशर, और बाय लेंथ L, है ना, L हो गया. तो ml माइनस 2 T माइनस 2 हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला P बाय L का. R का L हो गया और ईटा का ml माइनस 1 T माइनस 1 है. अब हम लोगों को पता है कि ये जो V इज इक्वल टू हम लोग कर रहे थे, अगर यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू P बाय L रेज टू द पावर A, R रेज टू द पावर B, ईटा रेज टू द पावर C. V का हम लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला पता है L क्यूब T माइनस 1, और इधर राइट साइड में हम लोग P बाय L का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं, R का यहाँ यूज करेंगे और ईटा का यहाँ यूज करेंगे. ठीक है, और इन सबको पावर A B C कर लेते हैं. अब इनके पावर को कंबाइन कर लेंगे तो m रेज टू द पावर A प्लस C, L रेज टू द पावर माइनस 2A प्लस B माइनस C एंड T रेज टू द पावर माइनस 2A माइनस C. अब इनके पावर्स को इक्वेट कर लेंगे. मान लो A प्लस C 0 हो गया, ठीक है. सो हमारा A प्लस C 0 हो गया. दूसरा माइनस 2A प्लस B माइनस C 3 हो गया, और माइनस 2A माइनस C जो है ये माइनस 1 हो गया. अब इन सब वैल्यूज को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, राइट, तो पहले वाले को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड को, तो A प्लस C 0 है और माइनस 2A माइनस C माइनस 1 है. ऐड कर दो इनको तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस A इज माइनस 1, तो A इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, A का वैल्यू 1 हो गया और C का वैल्यू माइनस 1 हो गया. ठीक है, A और C का वैल्यू आ गया. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके B का वैल्यू निकाल लेते हैं. माइनस 2 प्लस B प्लस 1 इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 हो गया. B का वैल्यू 4 हो गया. ठीक है, तो B का वैल्यू 4, C का वैल्यू माइनस 1 और A का वैल्यू 1. So applying the principle of homogeneity of dimensions, we get, अब देखो यहाँ पे हम लोग को पता है कि K का तो वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, राइट. सो अब B4A1 C माइनस 1 जब हम लोगों ने निकाल लिया, B का वैल्यू 4, A का वैल्यू 1 और C का वैल्यू माइनस 1, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. P बाय L रेज टू द पावर A 1,
r raised to the power b 4, eta raised to the power c minus 1. So this is equal to k times p r4 by eta l. k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने निकाला पाई बाई 8 के बराबर आ गया, तो v इज इक्वल टू पाई बाई 8 पी आर फोर बाई एटा एल. सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द पॉइजल्स इक्वेशन. Is it Poiseuille's formula? Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Now Stokes' law. So when a small spherical body moves through a viscous medium at rest, the layers of the medium touching the body are dragged along with it. But the layers of the medium away from the body are at rest. This causes a relative motion between different layers of the medium. तो मान लो एक small spherical body moves through a viscous medium at rest. तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक लिक्विड है, इसमें एक स्फेरिकल बॉडी इधर मूव कर रहा है ना, तो ये जो स्फेरिकल बॉडी इधर मूव कर रहा है, विस्कस फोर्स इसके एंड पे लगेगा, राइट. सो व्हेन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी मूव्स थ्रू अ विस्कस मीडियम एट रेस्ट, द लेयर्स ऑफ द मीडियम टचिंग द बॉडी आर ड्रैग्ड अलोंग विथ इट. तो जो लेयर्स इसके साथ टच कर रहे हैं ना, वो इसके साथ ही ड्रैग हो जाएंगे फ्रिक्शन की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से. बट द लेयर्स ऑफ द मीडियम अवे फ्रॉम द बॉडी आर एट रेस्ट, है ना. जो बॉडी से अवे जो लेयर्स हैं, ये सब रेस्ट पे रहेंगे. दिस कॉजेज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द मीडियम. ओके, सो दिस विल कॉज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीडियम. As a result of this, a backward dragging force, that is viscous drag, comes into play. तो इसके वजह से, है ना, एक viscous drag आ जाएगा into which opposes the motion of the body. This backward dragging force increases with the increase in velocity of the moving body. तो जैसे जैसे ये वेलोसिटी मूविंग बॉडी का इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स भी इंक्रीज करेगा. सो स्टोक फाउंड दैट द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स F acting on a particle, small spherical body of radius r moving with a medium of coefficient of viscosity eta with velocity v is given by F is equal to 6 pi eta into r into v. So Stokes law basically gives you a relation of the dragging force F, है ना, dragging force F with the radius of the spherical body moving through a medium of coefficient of viscosity eta with velocity v. So this is how. So this is only true when a spherical body is moving inside a viscous medium. So this is called Stokes law of viscosity. ये जो F is equal to 6 pi eta RV था, this is known as Stokes law of viscosity. So the relation 7 can be easily derived by the method of dimension. Stokes observed that viscous drag F depends upon coefficient of viscosity of the medium. So viscous drag जो है, this will depend on coefficient of viscosity eta of the medium. Okay. And second, velocity v of the body. Third, radius r of the spherical body. ठीक है, तो ये जो विस्कस ड्रैग f था, अब इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला से बेसिकली इसको डिराइव करेंगे डायमेंशनली, राइट. सो डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि विस्कस ड्रैग किन किन चीजों पे डिपेंड करता है. तो विस्कस ड्रैग हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी. इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है हमारा विस्कस ड्रैग. तो लेट्स से ये जो विस्कस ड्रैग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे जो डिपेंड कर रहा है, ईटा रेज टू द पावर a, वेलोसिटी v पे जो डिपेंड कर रहा है, v रेज टू द पावर b, और रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी पे जो डिपेंड कर रहा है, r रेज टू द पावर c, वेयर a, b and c आर dimension of F in terms of eta, v and
r, and k is a dimensionless constant. Now in dimensional formula, the relation 8 can be written as f का dimensional formula लिखा है m1 l1 t minus 2, eta का हो गया ml m1 l minus 1 t minus 1 raised to the power a, और ये एफिशिएंसी हो गया, और ये सॉरी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, और ये जो v है एल टी माइनस वन हो गया, और रेडियस जो है वो एल हो गया. इन सबको कंबाइन कर देते हैं, m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर माइनस a प्लस b प्लस c, एंड t रेज टू द पावर माइनस a minus b. Now applying the principle of homogeneity of dimension, we get a is equal to 1, okay, minus a plus b plus c is equal to 1, right? तो a का वैल्यू अगर 1 डाल दोगे तो माइनस वन प्लस बी प्लस सी 1 हो गया, और b प्लस सी जो है 2 हो गया. उसके अलावा टाइम वाले को, ये जो t वाले को करोगे माइनस ए माइनस बी और माइनस 2 है, तो बेसिकली माइनस ए मीन्स माइनस वन माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, और b इज इक्वल टू 1 हो गया. b का वैल्यू 1 हो गया तो c का भी वैल्यू 1 हो गया. सो देखो c का वैल्यू 1 है, राइट, b का वैल्यू 1 है, और a का वैल्यू माइनस 1, सॉरी a का वैल्यू भी 1 हो गया. So substituting the value of a, b and c, we get the drag force is equal to k times eta rv. k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने निकाला 6 पाई के बराबर होता है, तो k is equal to 6 pi eta into r into v. So this is basically the viscous drag या viscous force. Now importance of Stokes law. First, this law is used in determination of electronic charge with the help of Millikan's experiment. Second, this law accounts the formation of clouds. Third, this law accounts why the speed of raindrop is less than that of the body falling freely with a constant velocity from the height of cloud. And similarly, this law helps a man coming down with the help of parachute. ठीक है, तो ये पैराशूट वाला जो केस है वो अभी हम लोग आगे टर्मिनल वेलोसिटी जो करेंगे उसमें भी पढ़ेंगे. सो जो स्टोक्स लॉ जो है हमें ड्रैग फोर्स जो है, विस्कस फोर्स जो है, उसका वैल्यू निकाल के देता है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R इंटू V. क्लियर है बच्चों? अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी अगर एक लिक्विड के थ्रू पास कर रहा है, फ्लूइड के थ्रू पास कर रहा है, तो कुछ देर बाद इनिशियली तो वो एक्सेलरेट करेगा, थोड़ी देर बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लगता है. सो इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन द विस्कस मीडियम. तो अगर विस्कस मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो दिस इज द मैक्सिमम velocity, uniform velocity or constant velocity which an object can acquire. Now when a small spherical body falls freely through a viscous medium, three forces act on it. So there is a small spherical body which falls freely through a viscous medium. Okay, three forces act on it. First is weight of the body acting vertically downward. So अगर कोई भी बॉडी विस्कस, कोई भी बॉडी अगर किसी लिक्विड के थ्रू फ्लो कर रहा है या के लिक्विड के थ्रू फॉल कर रहा है, सॉरी, तो उसका जो वेट होगा एक नीचे की तरफ लगेगा, एक अपवर्ड थ्रस्ट होता है, राइट, जो कि लगता है, और एक विस्कस फोर्स होता है जो लगता है. सो लेट्स से एफ वी जो है विस्कस फोर्स है, ये अप थ्रस्ट हो गया और ये वेट हो गया. दीज आर द थ्री फोर्सेस एक्टिंग. So when a spherical body falls freely through a viscous medium, three forces act on it. First, weight of the body acting vertically downward. Second, upward thrust due to buoyancy equal to weight of the liquid displaced. And third, viscous drag acting on a direction opposite to the motion of the body. According to Stokes' law, we have seen that F is equal to 6 pi eta RV.
So ये जो according to Stokes law, F is directly proportional to V. That is, the opposing viscous drag does not goes on increasing with the increasing velocity of the body. As the body falls through a medium, its velocity goes on increasing due to gravity. Opposing therefore opposing drag which acts upward also goes on increasing. Now stage reaches when the true weight of the body is just equal to sum of the upward thrust due to buoyancy and the upward viscous drag. तो ये जो है ना, so there will be a stage when the true weight of the body is just equal to sum of the upward thrust due to buoyancy and upward viscous force. So sum of upward thrust due to buoyancy and upward viscous drag. So this is the true weight. Now at this stage there is no net force to accelerate the body, hence it starts falling with a constant velocity which is called terminal velocity. So if rho is the dimension of material of the spherical body of radius r and sigma be the density of the medium, okay? So weight of the body W is equal to volume into density into G, that is 4 by 3 pi r cube and rho into G. So upward thrust due to buoyancy Ft is equal to weight of the medium displaced. हम लोगों को पता है कि thrust कितने किसके बराबर होता है, जितना weight of the liquid displaced जिसमें भी हम लोग इसको इमर्स करेंगे. सो अपवर्ड थ्रस्ट ड्यू टू बॉयंसी इज वेट ऑफ द मीडियम डिस्प्लेस्ड, जिस मीडियम में हम इसको इमर्स कर रहे हैं. Ft is volume of the medium displaced by density into G. So volume of the medium displaced is 4 by 3 pi r cube. Sigma is the density of the liquid in which we are. So density of the medium is sigma. So 4 by 3 pi r square sigma into 4 by 3 pi r cube sigma into G. ये हमारा upward thrust हो गया. Weight of the body is basically volume into density. So 4 by 3 pi r cube. Okay, this is volume and okay, density is rho. So this is mass into acceleration due to gravity, that will give you W. अब इसमें values put करेंगे है ना और कर लेंगे. So if V is the terminal velocity of the body, then according to Stokes' law, upward viscous drag is equal to 6 pi eta r into V. Now when body attains terminal velocity, उस समय तो इसमें इतना ये force तो constant हो चुका होगा, ठीक है. So when body attains terminal velocity, तो उस समय Ft plus Fv जो नेट फोर्सेस जो है इक्विलिब्रियम में जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लगेगा. तो थ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी. सो जो थ्रस्ट है 4 by 3 pi r क्यूब सिग्मा इंटू जी, विस्कस फोर्स 6 pi eta r इंटू वी है, और जो वेट है दैट इज 4 by 3 pi r क्यूब सिग्मा इंटू जी. सो अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो 6 pi eta r v is 4 by 3 pi r cube sigma minus rho into g. So this v is equal to, ये सब इसको कैंसिल करते हैं, पाई और पाई कैंसिल हो गया, ठीक है. r और यहाँ पे एक r कैंसिल हो गया, 3 और 2 कैंसिल हो गया. So basically 2 by 9 into rho minus sigma into g. ठीक है. So this is the speed, terminal speed basically. So thus the terminal velocity of a spherical body depends upon, first किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, terminal velocity radius पे डिपेंड कर रहा है. Second, density of the body, density of the body, density of the medium, coefficient of viscosity of the medium in which the body is falling. ठीक है. तो ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी इन चीजों पे डिपेंड करता है, और टर्मिनल वेलोसिटी का जो वैल्यू है दैट इज 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाय 9 ईटा.
तो ये वैल्यू याद रखना है और उसके अलावा किस किस चीज पे डिपेंडेंट है वो भी ध्यान रखना है. Now, the falling rain drops and parachute finally fall with terminal velocity which is different for different bodies. The following result follow from above concept. The terminal velocity varies directly as the square of the radius of the body and inversely as the coefficient of viscosity of the body. It also depends upon density of the body and the medium. So जो टर्मिनल वेलोसिटी का जो वैल्यू है v इज इक्वल टू 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय 9 ईटा. So terminal velocity varies directly as the square of radius of the body. देखो r square पे वेरी कर रहा है and inversely as the coefficient of viscosity inversely proportional to eta है. It also depends upon density of the medium of body and the medium. ये भी ठीक है. And positive terminal velocity means the body is falling downward in a fluid. Negative terminal velocity means the body is moving upward in a fluid. If rho is less than sigma, the value of terminal velocity v is negative, that is body will move up with a constant velocity. It is due to this reason that the gas bubbles rise up through soda water bottle. उसके अलावा अगर रो का वैल्यू सिग्मा से बड़ा है, द वैल्यू ऑफ v इज पॉजिटिव, दैट इज बॉडी विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. If rho is equal to sigma, the body remains suspended in the medium. By knowing r, sigma, and rho, that and terminal velocity v, by noting the time taken by the body to cover a known distance in the liquid, the coefficient of viscosity of the liquid can be calculated. Okay. So viscosity में इतना ही है ना. और एक और चीज रह गया, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी. So variation of viscosity with viscosity, okay. So with increase in temperature, the viscosity of liquid decreases. तो temperature increase करने से viscosity decrease करता है. Variation of viscosity of liquid with temperature as given by slot is, तो तुमको वो ये पूरा रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुमको कैसे डिपेंडेंट है ये ध्यान में रहना चाहिए कि भाई with increase in temperature the viscosity of liquid decreases. So viscosity of all gases increase with increase in temperature. तो ये liquid है, liquid का जो है ऐसे डिपेंडेंट है, और all gases increases with increase in temperature. Okay. So viscosity of all gases increases with increase in temperature. Since the viscosity of a gas is directly proportional to square root of the absolute temperature, so eta is directly proportional to root T. So this result is obtained from kinetic theory of gases. Now with increase in pressure, the viscosity of liquid increases, but the viscosity of water decreases. The viscosity of gases remains unchanged. So देखो, increase in pressure से temperature के increase करने से जो लिक्विड का विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा और गैसेस का विस्कोसिटी इंक्रीज करता है, और द प्रेशर के इंक्रीज करने से viscosity of liquid increases but the viscosity of water decreases, the viscosity of gases remains unchanged. So these are the factors on which variation of viscosity depends. Okay, आज के लिए इतना ही है.